Viewers, as we speak, we cut across live to visuals from the Enforcement Directorate intensifies its investigations. Sandeep Ghosh's house also has been raided. I think his aide's house has been raided also. The investigation continues. The CBI and the ED also now investigating the cases of alleged irregularities at the RG Corps. Now, the operation is part of the probe into the rape and murder case, of course, but at the same time, remember, there is the CBI probing the financial irregularities and mishandling at the medical college. Now, ED's actions, of course, signify the escalation and intensification of the investigation, the progress of the investigation, to seek to uncover further evidence and connections related to this case. So that's the latest we have right now, viewers, as we speak. Live shots coming in from Sandeep Ghosh's house. I believe this is Sandeep Ghosh or this is his aide. We need to clarify that. Remember, Sandeep Ghosh's Kolkata residence has also been raided. That's what we know so far. Our Bangla getting us the latest news break. CBI's anti-corruption branch and the ED has intensified the probe against Sandeep Ghosh. Remember, Sandeep Ghosh has also moved the Supreme Court against the High Court's order to transfer the case to the CBI. And the latest update is that Sandeep Ghosh's house, too, the former principal of RG Corps, has been raided by the Enforcement Directorate. That's the big update. His aide Biplab Singh's house has also been raided in Howrah. Multiple locations in Kolkata have been raided, and this is, of course, part of the ongoing investigation in this RG Corps medical case. Apart from the lapses in the investigation, the lapses in security, the lens is on the financial irregularities and what was happening at the RG Corps Medical College is under scrutiny, while there are allegations of sale of dead bodies, how there were money taken for showing, allegations of bribes being taken by Sandeep Ghosh and his team to show the dead body to the deceased parents, family, and many such allegations are right now being probed by the agencies, and be it the CCTV, the CCTV scam that's also under lens, the entire racket that has been running in at the RG Corps, that's under lens. So this is the update we have right now. And viewers, we are getting live shots from outside Sandeep Ghosh's house that has been raided. It's been locked or unlocked, we have to see. And so you have two visuals coming in, viewers. One to the left of your screens is the visual coming in from Kolkata as Sandeep Ghosh's house that has been now raided. There is, of course, the media personnel who have gathered up outside. There are security personnel, ED sleuths are there raiding Sandeep Ghosh. I think they are waiting. I believe what I can see, there's a lock that has been put up and they're waiting for it to open, I believe. The right side is Sandeep Ghosh's aide Biplab Singh, who's a supplier. He has also been raided by the Enforcement Directorate. So the ED searches are underway, and this investigation is picking up pace, viewers, while the CBI too continues to probe. So that's the latest update we have right now, viewers. Multiple locations have been raided by the Enforcement Directorate. So you can see Sandeep Ghosh, he's in the CBI custody right now, and he has moved. And we are getting the latest update. Medical contractor, his aide, Biplab Singh, has also been raided, as we told you earlier. Sandeep Ghosh's aide being raided in Howrah, and to the left of his screens are the ED sleuths entering Sandeep Ghosh's house. As you can see now, they are entering the house with security, conducting searches, conducting raids at Sandeep Ghosh's residence. That's the update we have right now, viewers. And remember, there has been multiple lapses and also irregularities. So the rape and murder case is a separate case that has been probed. On the other hand, the irregularities, the racket that was running
the corruption at the RG Kar medical case, that is being conducted, that is also under the scanner of the CBI, the anti-corruption unit of the CBI, and of course the ED also coming in to check on the irregularities, to probe, investigate the multiple allegations that have been leveled against Shandip Ghosh, the former principal of RG Kar. So these are the latest visuals. It is live and breaking on Republic TV, viewers. Raids have been conducted a few days back also in multiple locations in Kolkata, remember, by the agencies, by the central agencies. And now it's double trouble now. You can see for Shandip Ghosh, as ED have also launched, apart from CBI. There were CBI raids that were conducted, and now the ED is also conducting raids. You can see the visuals coming in from South 24 Parganas as well. There is another raid that is going on in South 24 Parganas in West Bengal. So many of the aides of Shandip Ghosh have been now raided by the Enforcement Directorate. Biplab Singha, Shandip Ghosh, both, remember, are in the custody, and this of course clearly comes as a fresh trouble for Shandip Ghosh, and all this happening following his arrest by the CBI. The ED team has been now sent to conduct a raid at his homes, and early on Friday, remember, there is a raid that is happening at the Beleghata residence of Shandip Ghosh in Kolkata. ED officials being accompanied by the central forces. You can see the central forces are there in every location that has been raided by the central agency. They had to wait a long time, you can see, for to in fact enter the house and conduct searches. They had to wait for hours, raising many questions. What is Shandip Ghosh trying to hide? As the heat intensifies, is facing the heat, he's in CBI custody. And viewers, as we speak, we're getting in multiple reactions coming in. And viewers, the ED, remember, is conducting these raids at multiple locations. Shandip Ghosh is right now in CBI custody. Ghosh's residence is among just a list of places that were raided by the police. My colleague Tanaya from our Bangla newsroom in Kolkata joins us live on the broadcast. Tanaya, tell us more details about this investigation conducted by the ED. And we saw the visuals coming in. I think that was from Shandip Ghosh's residence, where the ED sleuths had to wait for a very long time to, in fact, enter the residence. देखिए, करीबन 2 घंटे के भी ज़्यादा टाइम ईडी के जो ऑफिसर्स लोग वहाँ पे गए थे, तो वो घर पे नहीं घुस पाए, क्योंकि घर में जो लोग थे वो बाहर नहीं आए, और उसके बाद जो ताला लगाया गया था डोर में वो नहीं खुला गया। लेकिन 2 घंटे के बाद ईडी के जो ऑफिसर्स लोग गए थे, तो वो फिर से वहाँ पर गए, और जाने के बाद दरवाज़ा खोला गया। उनके शायद उनका घर वाले जो थे वो बाहर आए। आने के बाद उनका दरवाज़ा खुलने के बाद ईडी अधिकारी जो भी थे तो वो घर पे गए, और बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन को लेके बहुत सारा क्वेश्चन अभी तक ईडी और सीबीआई के बीच में है, जिस बारे में जानकारी अभी मिल रहा है कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में जो घटना घटी है और उनमें जो इकोनॉमिकली जो भी करप्शन हुआ है, तो उसके ऊपर बेस करके ईडी अभी गए हैं संदीप घोष के घर में, और वहां जाने के बाद क्या मिलता है, वहां से कोई नथी अगर ईडी अधिकारी को मिल जाए कि इस मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में अगर कुछ पता चले, क्योंकि बहुत सारा एलिगेशन अभी आया है सामने। आरजी कर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के जो डिप्टी असिस्टेंट जो थे, डिप्टी सुपर जो थे अख्तर अली, तो उनके जो अभियोग थे, उनके जो एलिगेशन जितने सारे किए थे, उसके ऊपर बेस करके अभी ईडी के जो ऑफिशियल्स गए हैं संदीप घोष के घर, और उसके साइड बाय साइड हावड़ा में भी रेड चल रहा है। हावड़ा में जो संदीप घोष के जो बहुत करीबन एक बिजनेस पर्सन थे कि बिप्लब सिंह, तो उसके घर में और उसके जो अकाउंट देखते थे, जो अकाउंट्स के पूरे हिसाब जिनके पास रहता था, तो उनके घर में भी ईडी ऑफिशियल्स अभी है, और थोड़ी देर तो हो ही गए कि वो लोग वहां पर गए हैं। लेकिन ये देखने वाला चीज है कि ये जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में जो टेंडर के दुर्नीति के बारे में अभी सुना दिया, और उसके बावजूद भी मेडिकल जो सप्लायर्स थे उनके घर में भी गए थे, तो मेडिकल सप्लायर्स हो या फिर टेंडर हो, तो ये कौन
एविडेंस के ऊपर बेस करके वो दिए थे, ये अभी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ईडी आधिकारिक, ईडी ऑफिशियल्स जो अभी संदीप घोष के घर में घुसे हैं, करीबन 2 घंटे के भी ज्यादा टाइम लिए थे। सीबीआई जब गए थे, हमें याद है कि सीबीआई जाने के बाद भी दिखाई दिया कि 1 घंटे तक सीबीआई का कोई भी ऑफिशियल्स संदीप घोष के घर में नहीं घुस पाए थे। उसके बाद सीबीआई ने वहां पर गए, करीबन 10 घंटे के ऊपर सीबीआई आधिकारिक जो भी गए थे, तो वो संदीप घोष के घर में गए, उसके पास जो भी एविडेंस था वो वहां से कलेक्ट करने के बाद वो लोग बाहर आए थे। और आज देखने वाला चीज यही होगा कि ईडी आधिकारिक अभी गए हैं वहां पे, तो उनके पास कितने सारे नोटिस आते हैं, कितने सारे उनके पास एविडेंस आते हैं, उसके बाद पता चलेगा कि ईडी और सीबीआई का अगला स्टेप क्या होने वाला है। ओवर टू स्टूडियो। Right. Thank you so much, Sanaya, for joining us with the updates coming in, viewers. In fact, there are multiple revelations that are being made now by Abhaya's family. Now, in the latest, in the Abhaya's rape and murder probe, the victim's aunt has accused the police of pressurizing the family into making a statement. Now, on the 11th of August, after a meeting with the Mamata Police's Dr. Shivarno Goswami and speaking to the media, the police had allegedly coerced the family into recording a statement late at night. Now, the video of this encounter, which went viral on social media, was reportedly disseminated intentionally by Mamata Police after the victim's father questioned the allegations publicly. And that's the latest update. Take a listen into what Abhaya's aunt has alleged. মেয়ে তো চলে গেছে, তাতে আপনাদের এই নীরবতা আরো অনেক হয়তো দুষ্কৃতিকে আরো মানে সমাজে জন্ম দেবে, এটা বলেই চিঠিটা লেখা আর কি। ঠিক আছে, একটা বিষয় আমরা যেটা বলতে গিয়েছি সেটা হচ্ছে যে এই যে কালকে বাবা মা বললেন যে ডিসি নর্থ একটা টাকার অফার, কিন্তু আজকে সকালবেলা হঠাৎ করে দেখা গেল তৃণমূলের তরফ থেকে একটা ভিডিও প্রকাশ করা। কার তরফ থেকে সেটা বলতে পারবো না। হ্যাঁ, ভিডিও ভাইরাল হয়েছে, সেটা আমরা দেখেছি, এবং ভিডিওটা চাপ দিয়ে, পরিবারকে চাপ দিয়ে, বারবারই তো বলা হচ্ছে চাপ দিয়ে করানো হয়েছে। সেটা কবে করানো হয়েছে? 11 তারিখ রাত্রিবেলা। পুলিশ নিশ্চয়ই করেছে এসে, কারণ ওনারা এই কথাগুলো তো বলেছেন যে আপনারা যে এরকম বলছেন তাতে তো আপনাদের এখন, তখন আমাদের মানে কলকাতা পুলিশের কাছেই এই কেসটা ছিল, তাতে আপনাদের কেসে অসুবিধা হতে পারে। জোর দিয়ে আমাদের বাধ্য করা হয়েছিল এই কথাগুলো বলার জন্য। We'll go back to my colleague Tanaya from the Bangla newsroom. Now, Tanaya, there are 2 big allegations that have been made in the past 48 hours by Abhaya's family. First, that the parents are alleging that they were given money to silence them, to hush them down, and now in the latest, the victim's aunt is saying that they were coerced to make a statement. उनसे जबरन जो है एक स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड करवाई जा रही थी, और उन्होंने शिवर्नो गोस्वामी का बाकायदा नाम भी लिया है। बिल्कुल सही बात है कि अभया के जो पेरेंट्स लोग हैं वो जब प्रेस मीट कर रहे थे तो उनके तरफ से एक ही बात सामने आया कि अभया की जब डेड बॉडी घर पे पहुंचे तो उसके बाद जो डीसी नॉर्थ थे, तो डीसी नॉर्थ ने उनको साइड में लेके गए और उसके बाद उनको कंपेंसेशन के लिए बताया गया। तो पापा ने, अभया के जो पापा थे, तो उन्होंने बताया कि ये कंपेंसेशन के बारे में आप बता रहे हैं अभी, जहाँ पे मेरे लड़की अभी यहाँ पर सोई हुई है और वो कितना एफर्ट देने के बाद डॉक्टर्स हुआ है, वो तो आपके ऊपर, आपके जो बैच है तो वो भी इसका कीमत नहीं चुका सकते। तो ये बात बोलने के बाद वहां से पुलिस लोग जो भी थे, डीसी नॉर्थ, जिनके बारे में अभया के जो पेरेंट्स लोग हैं तो वो बता रहे थे, तो वो वहां से चले गए। लेकिन उसके बाद जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में जो लास्ट टाइम हमने देखा कि जो प्रोटेस्ट हुआ था, रात दखल जिसका नाम था, तो वहां पे पेरेंट्स लोग एक ही बात बोल रहे थे कि उनके पास बहुत बार यही बात बताया गया कि कंपेंसेशन के लिए, लेकिन वो पूरी तरह से रिफ्यूज कर दिए। लेकिन जो इस पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट इतना सारा अभियोग कर रहे हैं अभया के फैमिली, तो वो डीसी नॉर्थ कहाँ पर है? इसके पहले हम देखे थे कि जब वो वायरल वीडियो सामने आया, कि वायरल जो फोटो सामने आया, उसके बाद डीसी सेंट्रल जो इंदिरा मुखर्जी है, तो इंदिरा मुखर्जी बहुत बार प्रेस मीट कर चुके हैं और उसके बावजूद भी एक बात सामने आ रहा है कि डीसी नॉर्थ, जिसके बारे में इतना एलिगेशन सामने लाया गया, अभया के जो फैमिली मेंबर्स है वो लाए गए, तो उसके बावजूद अभी तक डीसी नॉर्थ कुछ भी
और कोई भी स्टेटमेंट सामने नहीं लाए। और उसके बावजूद जो टीएमसी के जो नेताएं हैं, मंत्री हैं, तो उनके तरफ से जो एक पाल्टा जो एक वीडियो सामने लाया, तो वहां पर बताया गया कि अभय की जो फैमिली है वो लोग बता रहे थे उस वीडियो में कि एक प्रेशर नहीं है उनके ऊपर। और उससे बावजूद उन लोगों ने और भी बातें कहा कि जो एलिगेशन अभी आया है उसके बारे में उनका कोई कहना नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पुलिस के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन अभी भी है और आगे देखा जाएगा कि डीसी नॉर्थ जिनके बारे में इतना सारा बात सामने आया तो वो अगर कुछ बताए मीडिया के सामने। ओवर टू स्टूडियो। Right. Thank you so much, Tanaya, for joining us with the updates coming in. Viewers, Republic TV continues to keep a track of the latest developments coming in right from the investigation of the CBI, of the ED, and the lens on Mamata Banerjee government, the police, Abhaya's family that has made some scathing allegations, and there is, of course, the political face-off that is now unfolding. The BJP has reacted sharply to the allegations. Take a listen in. TMC should now mean too much cover-up, and Trinamool Congress's too much cover-up has been completely exposed. Yesterday, when the parents told us about how police was offering them bribe, how cremation was hurried up, they made serious disclosures. The TNC shamelessly did a press conference, character assassinating the parents, that the parents had said that police never offered them a bribe. Now the truth has come out, that the parents were forced to record that video because obviously the Kolkata police put pressure on them that they would derail the investigation. But the parents chose to speak the truth. Not just the parents, but even other relatives have said how they were forced to record that video. But the question is not just about that video. There is a letter of Sandeep Ghosh, the same principal who was reinstated in 4 hours, as to how the doctor's duty room and the toilets should be destroyed, renovated, reconstructed, how the crime scene or the crime scene evidence should be tampered with in a way. We have proof that this principal was promoted and reinstated within 4 hours. Mamata Banerjee government extended patronage to him despite his illegal and corrupt activities.